Chemical coordination and integration. We have already learned that neural system provides point-to-point rapid coordination among organs. Neural coordination is fast but short-lived. Nerve fibers, they don't innervate all the cells of body. Therefore cell and also cellular functions need to be continuously regulated. तो इसलिए special kind of coordination या integration has to be provided. This function is carried out by hormones. Neural system and endocrine system, they jointly coordinate and regulate the physiological function of body. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स एब्सेंट होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. इनकी सिक्रीशंस को कहते हैं हम हार्मोन्स. हार्मोन क्या है? केमिकल है, प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिलीज्ड इनटू ब्लड, ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन एंड दिस इज डिस्टेंटली लोकेटेड. ये हो गई क्लासिकल डेफिनेशन. हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं. दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. ये हो गई साइंटिफिक या करंट डेफिनेशन. New definition covers number of new molecules in addition to hormones secreted by organized endocrine glands. Invertebrates possess endocrine system and this is very simple. It contains few hormones only. Vertebrates में large number of chemical act as hormones and these chemicals provide coordinations. Human endocrine system is described here. Endocrine glands plus tissues या cells that are hormone producing, diffused and located in different parts of our body. This together comprises endocrine system. Organized endocrine bodies in our body are pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, gonads. मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में ओवरी. In addition to these, some other organs जैसे कि gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormones. Brief account of structure and functions of all major endocrine glands and hypothalamus of human body is given. Hypothalamus is basal part of diencephalon. ये forebrain में होता है diencephalon. This regulates wide spectrum of body functions. It contains nuclei. These are neurosecretory cells. They produce hormones that regulate synthesis and secretion of pituitary hormones and इनके several groups present होते हैं न्यूक्लियाई के. Hormones produced by hypothalamus, there are of two types, releasing hormones and inhibiting hormones. Releasing जो stimulate करेंगे secretion of pituitary hormones और inhibiting inhibit करेंगे secretion of pituitary hormones. फिर gonadotrophin releasing hormone, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. ये भी इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स. सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी. हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सोन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन्स की, एंड दे रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दे रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. Posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. Pituitary gland is located in sella turcica. This is a bony cavity and this is attached to hypothalamus by a stalk and it is divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis commonly called as anterior pituitary. It produces several hormones, ये सारे जैसे growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Pars intermedia secretes only one hormone, melanocyte stimulating hormone. In humans, pars intermedia is almost merged with pars distalis. Neurohypophysis को हम pars nervosa भी कहते हैं, also known as posterior pituitary. It stores and releases two hormones, that is oxytocin or vasopressin. These hormones are actually synthesized by hypothalamus and transported axonally to neurohypophysis. Growth hormone की ओवर सिक्रीशन से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी होगी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, और अगर इसकी लो सिक्रीशन हुई तो स्टंटेड ग्रोथ लीडिंग टू पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म.